students, how are you? So the lecture 2, capacitance and capacitor. So in our previous lecture we have discussed about the capacitor and its capacitance. Means what's the meaning of capacitor? Capacitor क्या होता है? हमने discuss किया था कि capacitor is simply a device, a charge storage device, but that can store the charge temporarily and it release the charge immediately when required, and that was the difference between a capacitor and a battery. So we have also discussed about the capacitance of earth and the potential of earth. That was a very important concept. So today we are going to discuss the types of capacitor. मतलब बहुत different type के capacitors होते हैं. Just like the spherical capacitor, cylindrical capacitor, and the most important one, जिसके बेस पर पूरा चैप्टर है बेटा, that is called as a parallel plate capacitor. So today at first we will discuss the types of capacitors as the spherical capacitor, then we will proceed on to the cylindrical capacitor, and then we will move on to the main part of this chapter, क्योंकि इसके बाद जितने भी topics आएंगे बेटा, that are based on the topic the parallel plate capacitor. But before that, look at the topic. This is the capacitor. This is a spherical capacitor, and we have to find out the capacitance of this spherical capacitor. बेटा ये as it is numerical given है आपके textbook exercise का additional का. So listen very carefully about the spherical capacitor. Now look at this one. In the case of the spherical capacitor, there are the two conducting shells. Look at this one. This is the inner shell. This is the outer shell. Please listen very carefully about the diagram, because the diagram is the important part of these topics. So this is the inner shell, जिसको मैंने A से रिप्रेजेंट करा है, and this is the outer shell, that is the B. Now look at the charge distribution over there. आपको पता है जब हम चार्ज प्रोवाइड करते हैं तो इंडक्शन से भी चार्ज प्रोड्यूस होता है. तो इनिशियली क्या करा मैंने, we have to provide this inner sphere as a positive charge. इस इनर शेल का रेडियस है बेटा A और आउटर शेल का रेडियस मैंने बनाया that is B. So इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, A and B. Small a is the radius of the inner shell and small b is the radius of the outer shell. So initially I have to provide this inner shell as a positive charge. तो मैंने इसको positive charge दिया. Due to positive, the negative will induce on the inner shell of B. Positive है, सामने negative induce होगा, ये negative है तो बाहर क्या आएगा positive. We have already discussed about that कि charge इस way में distribute होता है. So once again we have to provide the positive charge on this shell. Due to induction positive है तो यहाँ पर negative आ जाएगा, negative है तो बाहर क्या आएगा positive, और बाहर वाले positive को मैंने अर्थ कर दिया. इसका मतलब ये वाला जो सारा चार्ज है बेटा, इसको हमने क्या कर दिया, इसको grounded कर दिया. That's why मैंने लिखा कि outside shell जो है, जो B shell है, उसके ऊपर total charge कितना होगा, 0 होगा. Once again there are two radii. One is the radius of the inner shell, that is small a, and the radius of the outer shell, that is the B, small b. We have to initially provide the positive charge on this shell due to the induction. इस positive से यहाँ अंदर क्या आएगा, negative, बाहर क्या आएगा, positive. तो हमने positive को अर्थ कर दिया, मतलब इस पूरे B के ऊपर जो charge है बचे वो अर्थ हो गया. That's why Q comes out to be 0. So we have to find out the capacitance of this spherical capacitor. In order to find out the capacitance, we have to use again the same formula. According to the principle of capacitance, हमने discuss किया था बच्चों, Q is equal to CV. कि when the charge is given to a body, its potential rises. We have already discussed this concept in the first lecture. So in this chapter, in this lecture, we have to discuss about the capacitance of this spherical capacitor. As हम क्या करते हैं, सबसे पहले potential निकालते हैं. Listen very carefully about the concept of this potential. That's a very important one. Look at the inner shell, that is A. बच्चों इस shell के ऊपर दो potential होंगे. एक तो potential due to this positive charge. एक potential होगा, this is the negative charge on the inner part of B shell. Once again, A shell के ऊपर दो potential हैं. One, the potential due to this positive charge. A shell के ऊपर दूसरा potential किसका है, the potential due to this negative charge. Means in this case we have to find out the potential on both the shells.
potential on A, potential on B, then we will find out the total potential. We have already discussed about that कि potential is a scalar quantity, means in order to find out the net potential हमें दोनों potentials को add करना है. So look at the board very carefully. हम पहले निकालते हैं potential at A. Look at the board very carefully. A के ऊपर अभी हमने डिस्कस किया, A के ऊपर दो पोटेंशियल है बच्चों. एक है पोटेंशियल ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज, एक है पोटेंशियल ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज. पोटेंशियल का फॉर्मूला याद होगा सबको, इज इट के क्यू बाय आर या कैपिटल क्यू लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो एट फर्स्ट आई एम कैलकुलेटिंग द पोटेंशियल ऑन या एट ए ड्यू टू दिस पॉजिटिव क्यू लिख देता हूं. दिस इज पॉजिटिव क्यू, ये है बच्चों, दिस इज नेगेटिव क्यू, और बाहर फिर क्या आएगा पॉजिटिव क्यू, जिसको हमने अर्थ कर दिया. सो पहले हम पोटेंशियल निकालते हैं A शेल के ऊपर ड्यू टू दिस पॉजिटिव क्यू. कैन आई राइट द पोटेंशियल एट A इज इक्वल टू k q बाय स्मॉल a. व्हाई इट इज स्मॉल a? क्योंकि इनर शेल का रेडियस कितना था, स्मॉल a था बेटा. चार्ज कितना है, पॉजिटिव q है. पोटेंशियल का फॉर्मूला सबको पता है, पोटेंशियल इज इक्वल टू k q बाय r. तो r की जगह मैंने क्या लिखा, a लिखा. Now this is not the potential on A. Potential A पर एक और होगा, किस चार्ज से होगा, माइनस से होगा. Then can I say that potential at A is also due to this negative charge? Is it minus k q by B also? बेटा check it out. Can we say that is negative से भी इस शेल के ऊपर पोटेंशियल होगा, पॉजिटिव से भी इस शेल के ऊपर पोटेंशियल होगा, नेगेटिव से पोटेंशियल. Now look at this one. Can we say that the potential due to negative is minus k q by A? So tell me what is the total potential on A? Is it k q by A? बट ऐड करना होता है minus k q by B. These two steps are only for your understanding. फिलहाल अगर आप डायरेक्ट भी लिखना चाहोगे कि पोटेंशियल एट A इस शेल A के ऊपर किस किस चार्ज का पोटेंशियल होगा, then the potential due to this positive charge, that is k q by radius is A, and the potential due to this negative charge, that is minus k q by B. इसको सॉल्व करते हैं. If I take k q as a common, is it 1 by A minus 1 by B? Is it k q A B B minus A? So I got the answer of potential at A. Once again, A पर दो charges का potential है. The potential due to the positive charge and potential due to the negative charge. So this is the potential at A. Now tell me what is potential at the shell B? Is it zero? The reason is अभी हमने क्या करा था, इस shell के ऊपर जो charge था वो सारा क्या कर दिया था, अर्थ कर दिया था. If the charge on the shell B is zero, then can we say that the potential is also zero? So VA हमने निकाल लिया, VB हमारे पास zero है. So I got the answer of the potential difference as, दोनों का potential difference कैसे निकालूं? अब राइट कट है यार. The potential difference is VA minus VB. बेटा B तो वैसे ही जीरो है, तो can we say that we got the answer of potential as KQ B minus A upon AB. So after getting the value of potential, once again this part is zero. Now I have to apply the formula of the capacitance as we know. Yes, bachcho, according to the first lecture we have discussed, Q is equal to CB. Here V stands for the net potential. बेटा यहाँ पर net potential जो आ चुका है, लिख देता हूँ यहाँ पर. This is the net potential. B तो zero ही है, तो net potential is the potential due to the A. So I have to find out the capacitance. So the capacitance comes out to be C is equal to Q by V. Q as it is, V बच्चों आपने निकाल लिया. This is the net potential. Is it K Q B minus A upon AB? So what's the answer? If I utilize it, can we say that the answer comes out to be 4 pi epsilon naught AB upon B minus A. So this is a very important result for the numerical conceptual. There is a capacitance due to the spherical capacitor. It is beta K होता है 1 upon 4 pi epsilon naught. No बोलेगा इसको. It comes out to be 4 pi epsilon naught A and B, that is the two radii upon B minus A. Now look at this part very carefully. Can we say that B minus A? B is the radius of the outer shell. और दिख रहा है आपको कि B की वैल्यू डेफिनेटली ज्यादा होगी किससे, A से. अगर B की वैल्यू A से ज्यादा होगी तो कैपेसिटेंस डेफिनेटली क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा. That's how the capacitance of the spherical capacitor. Look at the board very carefully again about the steps. इनर शेल है बेटा, उसके ऊपर हमने पॉजिटिव चार्ज दिया, रेडियस A है.
due to this positive, negative will induce on the inner shell of B and positive on the outer shell of B, जिसको हमने अर्थ कर दिया. Then the potential at A potential मतलब सॉरी A shell के ऊपर दो पोटेंशियल होंगे, दोबारा डिस्कस कर रहे हैं. A shell के ऊपर दो पोटेंशियल होंगे, the potential due to this positive and potential due to this negative, that is VA is equal to KQ by A. आप अगर इसको VA नहीं लिखना चाहते तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, inner shell of B, the potential due to the inner shell of B. बेटा ये B का inner shell है, कितना हुआ माइनस KQ by B. इसका मतलब A पर नेट पोटेंशियल या टोटल पोटेंशियल कितना हुआ A पर, इट इज द पोटेंशियल ड्यू टू दिस पॉजिटिव एंड पोटेंशियल ड्यू टू दिस नेगेटिव व्हिच इज ऑन द इनर पार्ट या इनर शेल ऑफ द B. Then by utilizing this one we got the answer of VA, that is potential at A. Once again बार-बार बोल रहा हूं बच्चों कि A शेल के ऊपर दो पोटेंशियल होंगे, एक तो पॉजिटिव ड्यू टू द पॉजिटिव एंड सेकंड इज ड्यू टू दिस नेगेटिव. B शेल जो है बेटा उसके आउटर पार्ट पर पोटेंशियल कितना होगा, 0. Then we have to find out the net potential and based on this one we have to calculate the capacitance of this spherical capacitor having the inner and the outer radii. बेटा B की वैल्यू हमेशा क्या है, ज्यादा रहेगी. अगर B की वैल्यू ज्यादा है तो डेफिनेटली द कैपेसिटेंस जो आएगा दैट इज ऑलवेज द पॉजिटिव वन. सो दैट्स फॉर द फर्स्ट टाइप ऑफ कैपेसिटर called as the spherical capacitor. Now we will proceed into the next one, that is called as a cylindrical capacitor. Go to the next type of capacitor, that is a cylindrical capacitor. That's very important also, so listen very carefully. So this is a cylindrical capacitor, again having the inner and the outer surface. So look at the board very carefully about the inner part of this cylindrical shell. This is the inner shell, this is the inner surface, this is the outer surface. इनर को मैंने A से रिप्रेजेंट करा, आउटर को हमने B से रिप्रेजेंट करा. इनर पार्ट का रेडियस दे रखा है स्मॉल a और आउटर पार्ट का रेडियस दे रखा है स्मॉल b. अगेन द सेम कांसेप्ट जो हमने पिछले टॉपिक में यूटिलाइज करा था. इनिशियली हमने इनर शेल पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस इनर शेल पर पॉजिटिव चार्ज यूटिलाइज करा, इसको प्रोवाइड करा. ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव विल इंड्यूस ऑन द इनर पार्ट ऑफ शेल b या सरफेस B एंड पॉजिटिव ऑन द आउटर वन. फिर हमने वही पिछले टॉपिक जैसे हमने आउटर पॉजिटिव को अर्थ कर दिया तो कैन वी से दैट बाहर चार्ज कितना हो गया बेटा, 0 हो गया. अगेन द सेम एस्पेक्ट कि वी हैव टू फाइंड आउट द नेट पोटेंशियल एंड बेस्ड ऑन दिस नेट पोटेंशियल वी विल फाइंड आउट द कैपेसिटेंस हियर. In order to make it easy we will use the concept of potential gradient. We have already discussed in the previous topic, that is E is equal to minus dV by dr. So by utilizing this method ये टॉपिक काफी इजी हो जाता है. इससे पिछला जो टॉपिक था बेटा आप उसको भी by using this potential gradient कंप्लीट कर सकते थे. Okay, so E is equal to minus dV by dr. दोबारा सुनोगे. This is a cylindrical capacitor having the two surfaces, inner and the outer. This is the inner shell having the radius A, the outer one is having the radius B. Let the positive charge is applied on the inner part. अगर positive inner पर आएगा बेटा then due to the induction ये positive है तो ये negative बनेगा, ये negative है तो outer positive बनेगा और उस positive को हमने earth कर दिया, मतलब this charge is earth, that's why this charge is 0. So now we have to find out the capacitance. So as we know E is equal to minus dV by dr, that is intensity is negative of potential gradient. But अगर हम यहाँ से dV की वैल्यू निकालें, so can we say that dV is equal to minus E into dr? Now the very important aspect of this one is intensity. But can we say that this is a wire? आपने पढ़ा था बेटा, this is the first application of the Gauss law. Suppose there is a wire and when the positive charge is introduced on that, is supplied on that, then it will form the cylindrical shape. Once again this was the first application of the Gauss law. वहां पर आपने इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला ड्राइव करा था, lambda upon 2 pi epsilon naught into r. That was the result of the first application of the Gauss law जो हमें यहाँ पर अप्लाई करना है, because this is nothing simply an infinite plane sheet of charge.
plane line of charge. So this is the infinite line of charge. जिसमें intensity का formula we have already driven, that is E is equal to lambda upon 2 pi epsilon naught r. So ये value मुझे अब यहाँ पर put करनी है. I think it is clear to you. This shape is due to the infinite line of charge. That's why we have to utilize the concept of intensity due to the infinite line charge. So dV is equal to minus E into dr. In order to get the value of total potential, what we have to do, we have to take the integral. Now look at the limits very carefully. dV, can I have to write the limit as VA to VB, potential at A to potential at B? dr, can I write the limit as A to B, that is inner radii is A and the outer is B. dV की integration होती है बच्चों, V, the limits are VB and VA is equal to minus, take it outside, intensity E की वैल्यू के बच्चे lambda upon 2 pi epsilon naught r into क्या आ गया dr. The limit is from A to B. Can I write this term as VB minus VA is equal to, is it minus lambda upon 2 pi epsilon naught as it is? Is it integral के अंदर है बेटा 1 by r into dr. The limit is from A to B. As we all know, 1 by r की इंटीग्रेशन होती है बेटा log. Is it minus 1 upon 2 pi epsilon naught 1 upon r की इंटीग्रेशन log r, the limits is from B to A. So can I write it is minus lambda upon 2 pi epsilon naught, the term become log E upper limit minus lower limit. अब सबको सॉल्व करना आता है, log A minus log B या log B minus log A. How to solve this one? Is it VB minus VA is equal to minus lambda upon 2 pi epsilon naught beta log B minus log A. Can I write this term as B by A? Now the most important step. VB minus VA is this value. Can we say that VB की value तो 0 थी? Can we say that the potential at B is equal to 0? क्योंकि बाहर वाले शेल पर पॉजिटिव चार्ज था और चार्ज 0 है, तो can we say that B पर पोटेंशियल 0 हो गया? अगर B पर पोटेंशियल 0 हुआ, then can we say that the potential at A comes out to be lambda upon 2 pi epsilon naught log E B by A, because potential at B क्या हो चुका है? Is it become 0? अगर potential at B 0 है, then the potential at A comes out to be lambda upon 2 pi epsilon naught log E B by A. One thing more, can we say that कि potential at A हमेशा positive होगा? सोचो क्यों? क्योंकि A शेल पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव. जब A शेल पे पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के बेस पर पोटेंशियल भी क्या होता है? पॉजिटिव. That's why can we say that potential at A comes out to be lambda upon 2 pi epsilon naught log E B by A. So we got the answer of potential. Now by using this potential, how to find out the capacitance? As we know, according to principle of capacitance, Q is equal to CV and C is equal to Q by V. Q as it is. So how to find out the value of this capacitance? Lambda put करता हूँ. It is lambda upon 2 pi epsilon naught log E B by A. C is equal to Q upon lambda upon 2 pi epsilon naught log E B by A. Now we have to use this charge as, but the charge is distributed over the line. When the charge is distributed over the line, then we have to use the linear charge distribution. First chapter में पढ़ा था हमने. Linear charge distribution having linear charge density, that is charge per unit length. तो बेटा अगर हम यहाँ से चार्ज की वैल्यू निकालें, is it lambda into L? Once again, lambda here stands for the linear charge density. So when the charge is distributed over the line, then we have the concept of linear charge density as charge per unit length. यहाँ से बेटा हमने चार्ज निकाला, it is lambda into L. तो अगर इस Q की वैल्यू पुट करें lambda into L, then what is the final answer? Is it lambda L upon 2 pi epsilon naught log E B by A? Lambda से lambda cancel. So what's the final answer? इसको ऊपर लेकर जाते हैं. So it is 2 pi epsilon naught into L upon log E B by A. So this is the capacitance of the cylindrical capacitor. Once again, this capacitor is having the two surfaces, inner and the outer one.
The inner is having the radius A, the outer surface is having the radius B. When we provide the positive charge to the inner surface, then due to the induction, negative will induce on the inner surface of B and positive on the outer surface of B. That's why अगर हम B के चार्ज को या इस outer charge को अर्थ करते हैं बेटा, then potential of the on the outer shell या outer surface of B क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. By utilizing the concept of the potential gradient, at first we have to find out the potential due to the positive as well as the negative charge on the inner surface, and due to this potential we will find out, we can calculate the value of the capacitance here. So that's one of the very important two topics. One is the capacitance of the spherical capacitor and second is the capacitance of the cylindrical capacitor. Now we will proceed on to the most important part, but ये दोनों topics extra में आते हैं. But now we are going to start the most important part of this chapter. इसके बाद पूरा का पूरा chapter इसी topic के base पर चलेगा. The topic is parallel plate capacitor. Let's move on to the most important topic of this chapter. The topic is the parallel plate capacitor. Today we will discuss कि parallel plate capacitor कैसे होता है, इसकी formation कैसे होती है, इसको कैसे बनाया जाता है, इसके related क्या-क्या concepts होते हैं, कैसे ये energy को store करता है, कैसे इसके capacitance को utilize करा जाता है. So there are so many concepts based on this parallel plate capacitor. So at first, as the name implies, the parallel plate capacitor utilize क्यों करा गया? But due to so many limitations of the spherical and the cylindrical capacitor, बहुत सारी limitations थी कि वहां पर जो intensity थी वो bounded नहीं थी, charge bounded नहीं था. That's why हमने spherical और cylindrical capacitor को बहुत ज्यादा utilize नहीं करा. Mainly spherical जो capacitor था is having so many limitations. So in order to overcome these limitations, हमने क्या करा? हमने एक different type का capacitor बनाया, that is called as the parallel plate capacitor, जो most commonly utilized capacitor है. Now at the start with parallel plate capacitor, as the name implies, इस capacitor के अंदर दो plates होती हैं. As the name implies, parallel plate. इस capacitor के अंदर दो parallel plates हैं. The one plate is having the positive charge, the another plate is having the negative charge. We have discussed an application of the Gauss law, that is the electric field intensity due to infinite sheet of charge. The same one is also here. इसके अंदर भी दो parallel sheets होंगी. The one sheet is having, both the sheets are having the equal area. Both the sheets are separated by a certain distance. The one sheet is having the positive charge and another sheet is having the negative charge. And due to this positive and the negative charge, an electric field is set up between these two plates. It's a very wider concept, so listen very carefully. So at the start with, अब बात करते हैं parallel plate capacitor की, जिसमें क्या है बेटा? It is having the two parallel sheets. This is the first sheet, second sheet. Both are having the same area. Let the area of cross section of these two one is A. Let these two sheets are separated by the distance D. The one sheet is having the positive charge on it. First sheet के ऊपर positive charge है बेटा, and second sheet is having infinite negative charge. So this is the shape of a parallel plate capacitor. छोटा सा concept आता है कि क्या इसी वजह से ये दो parallel sheets of charge हैं या दो parallel plates हैं, आप इसको इस वे में भी शो कर सकते हो. This is also the parallel plate capacitor. Again, having the two plates parallel to each other, separated by again the distance d. So this is also the shape of the parallel plate capacitor. Am I clear? Parallel capacitor बोलते हैं इसको. This is these two are the shapes of the parallel capacitor. Once again, is having the two plates या two surfaces separated by the certain distance. Both are having the same area. And due to this positive and this negative, can we say that an electric field is set up, जिसकी direction सबको पता है बेटा? The direction is from positive to negative. Now a question arises here कि एक पे positive, एक पे negative charge show कैसे करा रहा है, induce कैसे करा रहा है? Suppose there is a conductor, उस conductor के ऊपर conductor में बेटा positive भी है, negative भी है. There is another plate, there another conductor is having positive as well as negative.
So how to make the one as positive and the another as negative, क्योंकि जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि in the case of the parallel plate capacitor, one plate is having the positive charge and second plate is having the negative charge. उसको कैसे बनाया बेटा? हमने क्या करा, उसको एक बैटरी के साथ अटैच कर देना है. So if I attach a battery with it, can we say that ये positive part है, ये negative part है? क्या होगा सोचो? This conductor is having positive as well as negative. When I will provide positive here, तो can we say that इस capacitor के इस surface के इस conductor के negative charges move करना शुरू करेंगे. The negative start, electrons start moving towards the positive. तो electrons बाहर जब निकल जाएंगे, तो can we say that now it is having the positive charge only. This conductor is having positive as well as negative. If I apply the positive part to it, can we say that move तो बेटा सिर्फ electrons करेंगे. Can we say that इस conductor के सारे electrons बाहर आ जाएंगे. So this conductor is now having only the positive charge. Similarly, यहाँ से electrons बेटा इस conductor के अंदर जाएंगे. When the electrons move inside this conductor, can we say that उससे ये क्या होगा, ये सारा का सारा negatively charged बन जाएगा. So in this way, the one plate become a positive one, the second become the negative one, and that become the parallel plate capacitor having the two plates. One is having the positive charge and second is having the negative charge. So that's about the initial concept of this parallel plate capacitor. Once again, is having the two parallel plates, two conducting plates, two conductors बोल सकते हो, metal plates बोल सकते हो. So in order to produce positive and negative, हमने क्या करा, इनके साथ एक बैटरी को अटैच कर दिया. इस प्लेट में से सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर गए, that's why this become positively charged. और इस प्लेट में इलेक्ट्रॉन्स चले गए, then that's why this become the negatively charged. So that become the parallel plate capacitor. Now the next point is how to produce this parallel plate capacitor. इसको बनाया क्या, कैसे गया, उसका significance क्या था. The topic is the principle of parallel plate capacitor. So listen very carefully. Suppose there is a metal plate A. एक प्लेट है, metal plate है A, और हमने क्या करना है, इस मेटल प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करवाते जाना है. सो वी हैव टू प्रोवाइड द पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस प्लेट. हमने इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड करना शुरू कर दिया. तब तक पॉजिटिव चार्ज देते रहे जब तक इसका पोटेंशियल मैक्सिमम नहीं हो गया. आप सबको पता है Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है. मतलब अगर आप Q चार्ज देते जाओगे तो पोटेंशियल बढ़ता जाएगा और एक ऐसी स्टेज आएगी जब किसी सरफेस का पोटेंशियल क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा. When the potential become maximum, you are not able to provide more charge to that. We have taken so many examples. एक बकेट है, आप उसके अंदर पानी डालते जाओ, जब बकेट पूरी भर जाएगी, it means बकेट का पोटेंशियल मैक्सिमम हो गया. अब आप उसके अंदर और चार्ज और पानी नहीं डाल सकते, because the bucket has already attained its maximum potential. अब सोचो, अगर आपको उसके अंदर और पानी डालना है तो क्या करना है, आप क्या करो, उस बकेट के अंदर बेस के राउंड या कहीं पर भी एक होल कर दो. कितनी से जब आप उसके अंदर होल कर दोगे तो उस होल में से पानी बाहर जाना शुरू करेगा. अगर उस होल में से पानी बाहर जाएगा, now you can add more charge to that. Now the same concept is also here. हमने क्या करा बेटा, हमने एक मेटल प्लेट A यूज करी, इसको पॉजिटिव चार्ज दिया और पॉजिटिव चार्ज तब तक देते गए जब तक इसका पोटेंशियल मैक्सिमम ना हो जाए. क्योंकि जैसे इसका पोटेंशियल मैक्सिमम हुआ, नाउ इट विल नॉट एबल टू गेन मोर चार्ज, क्योंकि इसका पोटेंशियल मैक्सिमम हो चुका है. अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, जब हम चार्ज देते हैं बच्चों तो पोटेंशियल बढ़ता है और एक ऐसी स्टेज आती है when the potential become maximum, उसके बाद आप इसको और चार्ज प्रोवाइड नहीं कर सकते. अब हमने क्या करना है, now this plate is fully the positively charged. हमने क्या करा, इसके पैरेलल में एक और प्लेट को रख दिया. let that plate is B. now again the same concept. पॉजिटिव है, इंड्यूस करेगा, due to this positive the negative will induce on the front face of the plate B and positive on the other face of plate B. ये इंडक्शन हुआ. ये तो फुली पॉजिटिव चार्ज था बेटा. ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज, फुली पॉजिटिव चार्ज, जब हमने इसके पास एक प्लेट को रखा, देन ड्यू टू इंडक्शन, पॉजिटिव है ड्यू टू इंडक्शन, नेगेटिव विल इंड्यूस ऑन द फ्रंट फेस. ये बी प्लेट का फ्रंट फेस है, ये बी प्लेट का अदर फेस है.
फारदेस्ट फेस बोल सकते हो आप। सो नेगेटिव इंड्यूस हुआ, यहां पर पॉजिटिव हुआ। ध्यान से सुना दिस पॉइंट को। Can we say that this negative charge will reduce this positive? बेटा definitely negative positive को neutralize करता है। This negative will reduce, or you can say that this negative charge reduces the potential of plate A। बेटा potential वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं? अगर चार्ज रिड्यूस होगा तो नेगेटिव इस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करेगा। अगर ये नेगेटिव पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करेगा तो चार्ज कम होगा, और अगर चार्ज कम होगा तो कैन वी से दैट पोटेंशियल कम होगा। अगर चार्ज रिड्यूस होगा बेटा तो पोटेंशियल रिड्यूस होगा। और आपने क्या पढ़ा था? Q is equal to CV and Q by C is equal to V। अगर पोटेंशियल कम होगा तो कैन वी से दैट कैपेसिटेंस बढ़ेगा। कैपेसिटेंस बढ़ने का मतलब क्या होता है? व्हाट्स द मीनिंग ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ कैपेसिटेंस? बेटा कैपेसिटेंस इंक्रीज होने का मतलब कैपेसिटी का इंक्रीज होना। कैपेसिटी का इंक्रीज होना मतलब वी आर एबल टू प्रोवाइड मोर चार्ज टू दैट। यही तो सारा कॉन्सेप्ट चल रहा है। हमने एक प्लेट ली, उसको हमने पॉजिटिव चार्ज दिया, तब तक चार्ज देते गए जब तक उसका पोटेंशियल मैक्सिमम नहीं हो गया। When its potential become maximum, we are not able to provide it more charge, क्योंकि अब इसका पोटेंशियल मैक्सिमम हो चुका है। हमने इसकी कैपेसिटी को बढ़ाना था। हम इसके अंदर छोटी सी एग्जांपल देता हूं। हम पानी के अंदर शुगर डिसॉल्व करते हैं, हम शुगर डिसॉल्व करते जाते हैं, एक ऐसी स्टेज आ जाती है जब शुगर डिसॉल्व होना बंद हो जाती है। मतलब अब इसकी कैपेसिटी ओवर हो चुकी है, अब इसके बाद इसके अंदर और शुगर डिसॉल्व नहीं हो सकती। अगर हम उस पानी को गर्म कर दें तो गर्म करने के बाद वी कैन ऐड मोर शुगर टू दैट। तो कैन वी से दैट उस पानी को गर्म करने से उसकी शुगर को डिसॉल्व करने की कैपेसिटी बढ़ गई। मतलब इन ऑर्डर टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ दैट वाटर हमने क्या करा? उसको गर्म कर दिया। द सेम वन इज आल्सो हियर। प्लेट ए को चार्ज देते गए वो चार्ज मैक्सिमम हो गया। अब हम इसको और चार्ज नहीं दे सकते बट देना चाहते हैं। इसके लिए हमने क्या करा? उसके पैरेलल में एक और प्लेट रख दी। पॉजिटिव ने सामने नेगेटिव इंड्यूस करा और पॉजिटिव बैक फेस पे इंड्यूस करा। इस नेगेटिव ने इस प्लेट का पोटेंशियल डिक्रीज करना है और इस पॉजिटिव ने इसका पोटेंशियल इंक्रीज करना है। द नेगेटिव विल रिड्यूस द पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए। वंस अगेन अगर पोटेंशियल डिक्रीज हुआ तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, बट यहां पर एक स्पॉटर भी बैठा है। दिस पॉजिटिव विल इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए। हमने क्या करा? हमने इस पॉजिटिव को अर्थ कर दिया। जब मैंने इस पॉजिटिव को अर्थ करा, इसका मतलब स्पॉटर खत्म हो गया। ये स्पॉटर क्या कर रहा था? ये पॉजिटिव चार्ज इसके पोटेंशियल को बढ़ा रहा था, चार्ज को बढ़ा रहा था यार। पॉजिटिव को बढ़ा रहा था, चार्ज बढ़ रहा था तो पोटेंशियल भी बढ़ रहा था। पोटेंशियल बढ़ रहा था तो कैपेसिटेंस कम हो रहा था। बट नेगेटिव क्या कर रहा है? नेगेटिव पॉजिटिव को रिड्यूस कर रहा है, पोटेंशियल को रिड्यूस कर रहा है, और पोटेंशियल रिड्यूस होने से कैपेसिटेंस बढ़ रहा था, तो हमने इसके स्पॉटर को खत्म कर दिया। Now can I say that now due to the negative charge only, अब सिर्फ कौन सा चार्ज रहेगा? नेगेटिव। Due to the presence of negative charge only, the potential of plate A reduces to the large extent. Why I am using the word large extent? क्योंकि अब स्पॉटर तो चला गया, पहले स्पॉटर भी था, पॉजिटिव था, तो इसके पोटेंशियल को ज्यादा डिक्रीज नहीं होने दे रहा था, क्योंकि ये डिक्रीज कर रहा था बट ये सपोर्ट कर रहा था। जब हमने इसके पॉजिटिव को खत्म कर दिया, नाउ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओनली द नेगेटिव चार्ज, द पोटेंशियल ऑफ दिस प्लेट डिक्रीजेस टू द लार्ज एक्सटेंट। और अगर पोटेंशियल लार्ज एक्सटेंट पे डिक्रीज करेगा, देन द कैपेसिटेंस ऑफ दिस प्लेट इंक्रीजेस टू द लार्ज एक्सटेंट। सो इन दिस वे आप इसको और चार्ज दे सकते हो या ये वैसे इंड्यूस करता जाएगा, एंड एज ए रिजल्ट ये बन गया बच्चों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसमें एक साइड पे बन गया पॉजिटिव, दूसरी साइड पे बन गया नेगेटिव। बोथ द प्लेट्स आर हैविंग द सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन separated by the distance d, and the most important part, an electric field is set up between these two plates. And again the important aspect, क्या इस इंटेंसिटी का फॉर्मूला सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख लूं? अगेन दैट इज द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ द गॉस लॉ, जिसके अंदर हमने यू कैन यूज अ थर्ड एप्लीकेशन आल्सो, जिसमें हमने दो पैरेलल शीट ली थी। आपने स्पेशल केसेस पढ़े थे कि अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, हमने इंटेंसिटी का फॉर्मूला ड्राइव करा था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट।
और इनसाइड द प्लेट्स जब एक साइड पॉजिटिव है, in the case of the special case, that is when the one sheet is having the positive, second sheet is having the negative, then the formula of intensity comes out to be E is equal to sigma upon epsilon naught, where sigma stands for surface charge density. This is a sheet of charge, sheet of beta, the surface charge density, can we say that the surface charge density is sigma. So the formula of the intensity E is equal to sigma upon epsilon naught, and that's about the significance of this topic, the parallel plate capacitor. दोबारा सुनो, parallel plate capacitor, as the name implies, is having the two parallel plates having the same area of cross section separated by the small distance. The one plate is having the positive charge and second plate is having the negative charge. हमने डिस्कस किया वो पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे आएंगे। पिछले पार्ट में मैंने शो करा कि अगर आप इन दोनों कंडक्टर के साथ एक बैटरी अटैच कर दो तो डेफिनेटली एक कंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, दूसरे कंडक्टर में जाएंगे, एक में से निकलेंगे, दूसरे में जाएंगे। इट मींस द वन जहां से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं बिकम अ पॉजिटिवली चार्ज, और जहां पर जा रहे हैं देन दैट बिकम्स अ नेगेटिवली चार्ज। तो पैरेलल प्लेट्स तो है, एक पे पॉजिटिव आया, एक पे नेगेटिव आया, सो दैट बिकम अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। द प्रॉपर वे टू शो दिस पार्ट इज, हमने सबसे पहले मेटल प्लेट ए ली और उसके ऊपर पॉजिटिव डाल देंगे, चार्ज प्रोवाइड करोगे तो डेफिनेटली पोटेंशियल बढ़ेगा। आपने तब तक चार्ज देते रहो जब तक इस प्लेट ए का पोटेंशियल मैक्सिमम ना हो जाए। आफ्टर दैट जब इसका पोटेंशियल सैचुरेट पहुंच गया, नाउ वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड द मोर चार्ज, तो हमने क्या करा, इसको और चार्ज देने का मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझना, चार्ज नहीं दिया जा रहा मतलब इसकी कैपेसिटी खत्म हो गई और हम इसकी कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हैं। कैपेसिटी को बढ़ाने का मतलब आई वांट टू इंक्रीज द कैपेसिटेंस। क्या करा मैंने इसके सामने एक और प्लेट बी रखी, ड्यू टू इंडक्शन पॉजिटिव ने नेगेटिव इंड्यूस करा ऑन द फ्रंट फेस और बैक फेस पे प्रोड्यूस करा पॉजिटिव का। दिस नेगेटिव विल रिड्यूस द पोटेंशियल। क्यों रिड्यूस करेगा? नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा, चार्ज कम हो रहा है तो डेफिनेटली पोटेंशियल कम होगा। नेगेटिव चार्ज विल रिड्यूस द पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए, एंड जो बैक पे पॉजिटिव था, पॉजिटिव विल इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए। फिर हमने क्या करा, ये स्पोर्टर था, इस पॉजिटिव को हमने खत्म कर दिया। नाउ ड्यू टू द ओनली द नेगेटिव चार्ज द पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए रिड्यूसेस टू द लार्ज एक्सटेंट। अगर पोटेंशियल डिक्रीज हो गया बच्चों तो कैपेसिटेंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। कैपेसिटेंस इंक्रीज होने का मतलब कैपेसिटी बढ़ी, कैपेसिटी बढ़ने का मतलब वी आर एबल टू प्रोवाइड द मोर चार्ज टू दैट, एंड देन दैट बिकम द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज हैविंग द पॉजिटिव ऑन वन साइड, on one part, one plate, and the negative on the another one. Both are having the same area of cross section, having the d distance apart. So an electric field is set up between these two plates, having a formula E is equal to sigma upon epsilon naught, that we have already discussed in the Gauss law, the third application of the Gauss law. So that's what the concept of parallel plate capacitance.